Hello student, Dr. 𝓢𝓸𝓻𝓮 here. The today lecture is on measure of central tendency in which we will study about the mean, median and mode. Now, first of all, we should know about the measure of central tendency. What is the meaning of central tendency? So you can say that central tendency is a descriptive statistics that describe the average or a typical value of set of the scores or the data. Now, they are the three common measure of central tendency: the mean, median, and the mode. Now, first we have to understand what is the mean. Mean is divided into the two parts. Like we have the two type of data, group data और अनग्रुप डेटा. ऐसे ही मीन को दो तरीके से डिवाइड कर दिया गया है डेटा के अकॉर्डिंगली, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा. In group data we have to calculate by the two methods. We can calculate the group ungroup data by two methods: direct method or shortcut method. And shortcut method is also known as assume mean method. ऐसे ही ग्रुप डेटा जो होता है वो भी तीन तरीके से डिवाइडेड है: डायरेक्ट मैथड, शॉर्टकट मैथड और स्टेप डेविएशन मैथड. Now, what is the meaning of arithmetic mean? Arithmetic mean is just, you can say that it's a sum of the observation. Sum of the observation which is divided by the number of the observation. And you can see on the screen सिंबल जो होता है मीन का एक्स बार इस तरीके का सिंबल होता है. And for example, like x1, x2, x3 and so on, we have a data. Like, so we have to sum up that data and divide it by the number of the observation, number of the data, right? Now, what are the merits and the demerits, or you can say that the advantages and disadvantages of the arithmetic mean or mean? तो merits क्या होता है? It's readily defined, it easy to understand and easy to calculate. If the number of the item is sufficiently large, then it is more accurate and more reliable. Now, first of all, mean is not an position. Positional average is not a mean. Median is a positional average, not mean. That's why it is not based on the position in the series. If it is possible to calculate, even if some of the details of the given are of the data are lacking, of all the observation, it is least affected by the fluctuation of sampling, and it provide a good basis for comparison. When we are talking about the demerits, it is obtained by the inspection, not located. Right? It cannot be obtained by inspections or not located through a frequency graph, and it cannot be calculated in the study of qualitative phenomena. It is not capable for the numerical measurement like intelligence, beauty, honesty, etc. And it can ignore any single item only at the risk of losing its accuracy. And it is affected very much by the extreme values. And it cannot be calculated for the open end class. And it mean may lead to fallacious conclusion if the details of the data from which is computed are not given. Now these are the formula of the group data and the group data. Like direct method, we have to sum up of the x series divided by number of observation. And when we are talking about the group data, then we have to multiply the frequency with x series and divided by the number of frequency, or you can say that sum of the frequency. Shortcut method is also known as assume mean method. Then we have to calculate the deviation is calculated by xi minus a is your provisional mean, or you can say that assume mean, right? Step deviation may you have to calculate u means xi minus a upon h, and h is just a difference between the class interval, or you can say that width of the class interval, right? Now, for example, you have to calculate the assume mean method here, right? We have the class interval 10 to 25. Now you can see the solution. This is the class interval 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55. This is the class interval, and there is the frequency 2, 3, 7, 6, 6, 6. Now we have to calculate the class mark. Class mark, that is the mid value. Xi, that is the mid value, which is calculated from the class interval, in which you have to do that 10 plus 25 divided by 2, then we get the 17.5. 25 plus 40 divided by 2, we get 32.5, and so on. Right? Now we have to calculate the di. For the di का formula जो होता है वो होता है xi minus a.
ए इज अ अज्यूम मेथड और अज्यूम मीन और प्रोविजनल मीन। तो जो हमारी एक्स सीरीज है उसमें से एक्स सीरीज में से आप कोई भी नंबर को एज एन अज्यूम ले सकते हैं। सो अज्यूम आपने नंबर अज्यूम कर लिया तो एक्स आई सीरीज में से माइनस करते चलिए। लाइक 17.5 में से माइनस होगा 47.5, सो वी गेट 30 माइनस 30। 32.5 minus 47.5, so we get minus 15. 47.5 minus 47.5, we get 0, and so on. Now in the last column you can see that fi di, fi multiplied di, तो फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी 2, डी आई क्या है -30, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -30 वी गेट -60, 3 मल्टीप्लाई -15 सो वी गेट -45, 7 मल्टीप्लाई बाय 0 then we get 0, right, and so on. Now in this case you have to do the sum of frequency, that is 30, and sum of frequency into di, fi di का से frequency अगर आप कैलकुलेट करते हो, सम अप कैलकुलेट करते हो, then we get 435. तो आप मीन इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो एंड पुट द ऑल द वैल्यूज इन योर फॉर्मूला, लाइक अज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अज्यूम मीन हमने 47.5 लिया हुआ है, सिग्मा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो 30 है, एंड सम ऑफ फ्रीक्वेंसी और डेविएशन जो है वो 435 है। यू कैन अप्लाई फ्रॉम द फॉर्मूला एंड यू कैन गेट मीन, दैट इज 62. Now, what is the median? Median is the middlemost number that divide the group into two equal part. One part is all about the greater values, and other part is all about the less values. Right? Now, in this case, जो numbers जो data जो divided है वो दो types में divide कर दिया, that is even and the odd. अगर इवन है तो हम लोग एवरेज लेंगे n अपॉन टू एंड n अपॉन टू प्लस वन टर्म का। अगर ऑड है देन वी हैव टू कैलकुलेट n प्लस वन अप डिवाइडेड बाय टू। Now, what are the merits of median? Median is not influenced by the extreme value, and हमने mean के केस में देखा था mean is affected by the extreme value because median is an positional value. Median can be calculated in the case of distribution with open end intervals. Median can be located if the data are incomplete. Now, what are the demerits? A slightly change in the series may bring drastic change in the median value. In the case of even number of items or continuous series, median is an estimated value other than any value in the series. It is not suitable for further mathematical treatment except its use in calculating mean deviation. It does not take into the account of all the observation. Now the formula of median. This is the question of the median. You have to focus on this, that weight in gram, that class interval is in the weight in grams, and frequency is in the number of apples. तो दिस इज द क्वेश्चन। तो हमने जो इतने भी क्लास इंटरवल्स हैं वो हमने ले लिए हैं, अपनी फ्रिक्वेंसी ले लिया है। वी हैव टू, इन द केस ऑफ मीडियन, we have to calculate the cumulative frequency. Cumulative frequency is just a sum up of the, or you can say that sum of the frequency. Like 14 का 14 आपने लिखा, 14 plus 20 we get 34, 34 plus 42 76, 76 plus 54 130, 130 plus 45 175, and so on. अब तो आप लास्ट में cumulative frequency का देखोगे 200 and number of apples को देखोगे 200, that will be match, right? नाउ मीडियन जो ग्रुप डेटा की जब बात होती है, जब क्लास इंटरवल्स की बात होती है, जब फ्रिक्वेंसी आ जाती है क्वेश्चन में, तब हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, एल प्लस एन अपॉन टू माइनस एम अपॉन एफ इंटू सी। ठीक है, तो एल जो हो गया, अब लोअर लिमिट, अब देखो हमने एन अपॉन टू किया, 200 डिवाइडेड बाई टू, दैट इज 100। तो 100 हमारी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में कहाँ लाई कर रहा है, 130 पे लाई कर रहा है। तो 440 से 450 वाली क्लास इंटरवल पे हम फोकस रखेंगे। तो हमारा लोअर लिमिट क्या हो गया, 440 हो गया, राइट। एन अपॉन टू हमने निकाल ही लिया, दैट इज 100। एम जो होता है हमारा, जो 130 है उसके ऊपर वाला प्रीसीडिंग वाला लिया जाएगा हमारा, राइट। तो दैट इज 76। और फ्रिक्वेंसी हमारी ली जाएगी जिस जिस मॉडल क्लास पे हम फोकस कर रहे हैं, दैट इज 54, राइट। and C is the difference between the class interval, that is 10, 450 450 and 440 and 450 का difference जो है, that is the 10, and you can apply into the formula
and we get 444.44 grams. नाउ इन दिस क्वेश्चन आप इधर फोकस करोगे तो क्लास मार्क्स जो है हमारे जो इंटरवल्स हैं क्लास इंटरवल, ये हमारे डिस्क्रीट सीरीज में कंटिन्यूअस सीरीज में नहीं है। लाइक 10 से 19, 20 से 29, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है हमारी। तो इसको कंटिन्यूअस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 0.5 हम लोअर लिमिट में माइनस कर देते हैं और 0.5 प्लस कर देते हैं अपर लिमिट में। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी 10 है उसमें 0.5 माइनस हो जाएगा, 19 में 0.5 प्लस हो जाएगा, और इस तरीके से पूरी क्लास इंटरवल हमारी चेंज हो जाएगी, राइट। और सेम हम ये एक चीज करेंगे और हमारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड हमें मीडियन का आंसर मिल जाएगा। ना मोड क्या होता है, मोड इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, राइट, और यू कैन से दैट रिपीटेटिव वैल्यू इज अ मोड, repetitive number is a mode, और mode is a nominal statistics, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मोड के, इट्स अ नॉमिनल स्टैटिस्टिक्स, इज द इंस्पेक्शन एवरेज, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग स्कोर, जैसे मैंने आपको बताया रिपीटेटिव सबसे मोस्ट अकरिंग नंबर जो आता है दैट इज द मोड, यूजली अकर नियर द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, cannot be obtained by mathematical operations, and most popular method is a mode, and some distribution have more than one popular score. अब ग्रुप डेटा है तो हमें ग्रुप डेटा पे ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं मोड का, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो, टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। एल मीन्स लोअर लिमिट, एफ वन जो होता है हमारी जो हमारी फ्रिक्वेंसी है, एफ जीरो उसकी प्रिसीडिंग एंड एफ टू उसकी सक्सीडिंग, एंड एच वी ऑलरेडी नो द डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल। नाउ दिस इज द क्वेश्चन मार्क्स, क्लास इंटरवल दिया हुआ है हमारा, दैट इज द मार्क्स ओब्टेन, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, दैट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट। हमें मोड के केस में क्या करना होता है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी का सबसे ज्यादा हाईएस्ट, जैसे आप देखोगे हमने बताया हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है, अब इस क्वेश्चन में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 12, तो वी विल फोकस ऑन दिस ओनली, 20 to 30 एंड 12 फोकस हम रखेंगे, राइट। तो हमारा लोअर लिमिट, अपना कम टू द फॉर्मूला, लोअर लिमिट क्या है हमारी 20, हमारा डिफरेंस क्या निकल के आएगा, एच क्या हो गया हमारा 10, ठीक है। एफ वन इज जिस फ्रीक्वेंसी की हम बात करें दैट इज 12, और एफ जीरो उसके ऊपर वाला दैट इज प्रीसीडिंग जो है वो 5 है, और उसकी सक्सीडिंग वाला जो है वो 8 है। नाउ यू कैन पुट ऑल दीज वैल्यू इनटू द फॉर्मूला, सो वी गेट द आंसर, राइट, 26.364। Now, what is the comparison between the mean, median and mode, right? So, mean जो आप देखोगे तो mean क्या होता है, इट्स एवरेज, आपकी एवरेजेस बताता है, और एवरेजेस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल देखो, लाइक 2 2 3 4 5 ये दिया हुआ है, तो मीन कहता है कि इन जितनी भी हमारा डेटा गिवन है, राइट, इसको सम अप कर दो, इसको प्लस कर दो, तो हम 2 + 2 + 3 + 4 + 5 को कर देंगे एंड डिवाइड जितने हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स है, तो नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 आइटम्स है, तो इन सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, सो वी गेट 3.2, राइट, हमें एवरेज मिल गया। मीडियन के केस में क्या होता है, मीडियन ये कहता है जो मिड वैल्यू है ना इज अ मीडियन, तभी तो हमारा मिड वैल्यू जब होती है मीडियन, तो ये हाफ डिवाइड कर देता है, या तो ग्रेटर वैल्यूज में चला जाएगा और एक पार्ट जो होगा वो हमारा स्मॉलर वैल्यूज में चला जाएगा। तो अगर इस केस में हमारी मिड वैल्यू जो है वो है 3, तो अब आप देखो 3 को मिड पॉइंट रखो और 3 के राइट हैंड साइड जाओगे आप तो हाई ग्रेटर वैल्यूज दिख रही है, लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो आपको लेस वैल्यूज दिख रही है, लोअर वैल्यूज दिख रही है। नाउ इन द केस ऑफ मोड, मोड कहता है रिपीटेटिव नंबर, सबसे ज्यादा मोस्ट रिपीटेटिव नंबर जो है दैट इज द मोड। तो रिपीटेटिव आप देखोगे यहाँ पे 2 2 3 4 5, सबसे ज्यादा रिपीटेटिव जो हो रहा है वो हो रहा है 2, तो हमारा मोड क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।